फरमावन अलमदार अखने मरे अखने जेवे तंग गसे आलम वत्यात ब्रे अखने कने ब्याखने हे चरक गसे बंद कुस क्या खेये. ज़ाहिरी तौर पे ऑन ए वेरी सुपरफिशियल लेवल इन लाइंस की मीनिंग को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है. अखने मरे अखने जेवे if a bird doesn't come and then death doesn't befall, then tang gase alam, the world would grind to a halt, and vatat bray, and there would be chaos all around. And akhne kini, if one doesn't sell, byakhne he, and then someone doesn't purchase, charak gase band, kus kya khe, the cycle would come to a halt, and then there would be no sustenance for anyone left. If it is such an obvious thing to say, then why say it at all? Sometimes we do require reminding, so maybe that's the reason. Or is there something more than what catches the eye? अलमदार की इन 4 लाइंस में जो पहला कपलेट है और दूसरा कपलेट है, इन दोनों में रिलेशन तो बड़ा ऑब्वियस है. अखने मारे अखने जेवे अखने कने ब्याखने हे तंग गसे आलम वत्यात ब्रे और चरक गसे बंद कुस क्या खे. So one of the ways to understand it then would be कि पैरेलल ड्रॉ किया गया है, और ये यूजुअली पोइट्री में तब किया जाता है जब एक चीज़ का मीनिंग लोगों के लिए ऑब्वियस हो और उसको यूज़ करके दूसरी चीज़ की मीनिंग बताई जा रही हो. इन दिस केस विच वन इज़ द वन दैट इज़ ऑब्वियस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. If we take the first couplet to be the obvious one, then what that would mean is that Alamdar is trying to tell us कि जो दौलत है इसका आना जाना वैसे ही ज़िंदगी के आने जाने की तरह ही है, तो इसमें हमको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए अगर हमारे पास कम है, एंड इफ़ वी हैव मोर उसका भी हमें घमंड नहीं होना चाहिए. फर्दर विद इन इट द सेकेंड लाइन देन टेल्स अस कि इफ़ वेल्थ डजंट चेंज हैंड्स, if one only takes and another one only gives, the world would come to a halt. What happens if the meaning of the second couplet was obvious to the addressees of Alamdar? So they would have understood कि आँखने कने ब्याखने हे चरक गसे बंद कुस क्या खे. Since the first couplet and second couplet are constructed parallelly, we can understand what the first couplet means by understanding what the second couplet means. And one of the phrases in the second couplet is charak gase band, workshop close हो जाएगा अगर खरीद फरोख्त नहीं होगी. तंग गसे आलम then would mean charak gase band. And like selling and buying are necessary for the workshop to run, birth and death are necessary for alam to keep on running. So for the workshop to keep on running, give and take is necessary. For the world to keep on running, death and birth are necessary. But why do we need to know this? What is the greater lesson that we draw from it? It seems to me that there are 2 broader themes that are being addressed here. One, the wisdom of what happens in nature, and second is justice, adl. Quran repeats the story of Hazrat Musa and when he meets Hazrat Khizr. And in that story what we have been taught is that there might be things that happen in our daily living which we might not be able to make sense of, but there's a greater purpose all of the things are serving. In the story of Hazrat Musa and Hazrat Khizr, Hazrat Musa apparently seems to be agitated by the acts which Hazrat Khizr commits, and he keeps on asking why is he doing what he is doing. हज़रत खिज़र फाइनली बयान करते हैं उन चीज़ों का विज़डम जो भी उन्होंने किया होता है, और उससे हमको यही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगियों में या फिर इस कायनात में जो चीज़ें हो रही हैं उनका कुछ मकसद है. और ये थीम कि गॉड डज़ नॉट डू एनीथिंग इन वेन, दैट दिस लाइफ इज़ नॉट merely a play for God, is repeated in Quran. But how are these 2 couplets linked with adl? Turns out that balance has been equated with justice in Quran. Historically as well, the symbol of balance has been the symbol of justice. If you look at Surah Rahman, in it God says that the sun and the moon, they follow a particular path, and the sky has been
raised and there's a balance in everything. And you too should do justice. Balance has been linked with justice. Similarly, in these two couplets, balance is being talked about. The lines on birth and death, they link to the idea of divine justice in the sense that birth and death are part of natural order established by God, and if one of them would not take place, that balance would be disrupted. Similarly, the line on selling and buying, it talks about justice in societal and economic aspect. The buying and selling of goods and services are essential for a just and equitable society. If there's a disruption in it, for example, like in the case of hoarding, or if one party only gives, the other only takes, there would be injustice in society. If there is injustice, life would not take place. किसी भी कलाम के टाइमलेस होने के लिए उसका ज़रूरी है कि it appeals to people from different generations. Now for that to happen, the books of timeless wisdom often contain within them possibility of a lot of meanings. अब ये जो बहुत सारी meanings है, this does not necessarily mean that these meanings would contradict each other. They might just form an explanation or subset of an earlier meaning. And this also doesn't mean कि जो text है वो ambiguous है. In fact, जब Arab linguists इजाज़ुल कुरान को समझने की कोशिश करते, so it prompted them to come up with the maxim that the best composition is the least in size but the greatest in semantic outcomes. So they recognized it. कि सबसे अच्छा टेक्स्ट वो होता है जो बिल्कुल कंसाइज हो, बहुत कम बातें की गई हो, लेकिन अपने अंदर बहुत गहरी और बहुत ज़्यादा मीनिंग रखती हो. इस कंटेक्स्ट में हमारे अलमदार उनका जो कलाम है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है. हमने बात की कि उन्होंने फरमाया अख नहीं मारे अख नहीं से तंग गैसे आलम वथ्यात ब्राई अख नहीं किन्ने ब्याख नहीं है चरक गैसे बन कुछ क्या खे. हमने इसको बड़े सारे एंगल से समझने की कोशिश की. क्या ऐसा पॉसिबल है कि वी कैन डिराइव सम मोर मीनिंग फ्रॉम इट? हम उस दौर में जी रहे हैं in which inequalities are frowned upon and many ideologies wish to equalize everything. हर एक चीज़ को equalize करना है और ये apparently एक noble cause लगता है. Alamdar comes and says अख नहीं मारे अख नहीं ज़े तंग गैसे आलम वथ्यात ब्राई अख नहीं किन्ने ब्याख नहीं है चरक गैसे बन कुछ क्या खे. That if one isn't born and the other doesn't die, if one doesn't sell and other doesn't buy, there would be chaos all around. जिंदगी possible नहीं हो पाएगी. In other words, ये जो difference है, it's a bargain for life to take place. In fact, ये बहुत interesting है that he says that if one doesn't sell and other doesn't buy, चरक गैसे बंद, which means the factory would stop production. And this hits at the center of many modern ideologies which frown upon factories and wish to turn the buyer and seller into one. While Alamdar distinguishes between the two personalities as two separate entities, akh nahi kine akh nahi hai. This acceptance of inequality as a divinely ordained form of life is inscribed in Quran in many places. God says, and if it were not for Allah checking some people by means of other, the earth would have been corrupted. Do not envy the way that God has made some of you excel over others, and Allah has favored some of you over others in provision. हमने बात की अलमदार के कलाम की और उसकी मीनिंग हमने डिराइव की, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि he wasn't reciting his poetry in vacuum. वहाँ पे और भी लोग हैं आसपास, वो हैं, उनके disciples हैं. They must have developed a common vocabulary as well, phrases, sentences. They would mean something to them. ये हम सब करते हैं. So there is you and your family have some vocabulary which no one other outside your family would understand. Only your family understands. मुझसे भी जो मुझे सुनते हैं वो भी मेरी कुछ vocabulary से वाकिफ़ हैं जो बाकी नहीं वाकिफ़. जैसे for example, eat my noodles. Now eat my noodles someone can understand who listens to me regularly कि मैं क्या कह रहा हूँ. But for others they would say कि noodles के बारे में बात हो रही है and he is asking us to have his noodles. ये उसका literal meaning होगा, which is correct. लेकिन those who are aware of my vocabulary वो इससे और भी बेहतर meaning derive कर सकते हैं. That doesn't mean कि जो earlier meaning है वो गलत है. So there is much more meaning in all of these couplets and all of these Kalaam and Shrukh, which is hidden from people, those who are not aware of what Alamdar is saying himself, जो उनकी daily vocabulary है. Now such meaning
which is limited to your core group is called esoteric meaning. Esoteric understanding किसी भी write up की, किसी भी prose poetry की, it would go beyond the literal or surface meaning. So you can understand it cannot be directly derived from the text. So where do we derive it from? By being part of the school. उस स्कूल में उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, वैसे ही वो एसोटेरिक मीनिंग डिराइव की जा सकती है. तो ये कलाम-ए-शेख-ul-आलम है, इसमें स्पिरिचुअलिटी और सिंबलिज्म का इस्तेमाल होगा. दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर यू वुड हैव टू हैव अ डीपर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट, नॉलेज ऑफ मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन. सूफिज्म में विच एम्फेसाइजेज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड इनर नॉलेज, एसोटेरिक इंटरप्रिटेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो लाइन्स हैं बर्थ और डेथ की, दे कुड सिंबलाइज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन. बाइंग एंड सेलिंग, दे माइट रिप्रेजेंट द एक्सचेंज ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड गाइडेंस. वी डोंट नो, द डिसाइपल्स वुड हैव नोन कि खरीद फरोख्त अलमदार किस चीज़ को कहते हैं. हम बात कर रहे थे आखने मारे आखने ज़ेर तंग गैसे आलम वथ्यात ब्राई, आखने किन ब्याखने है चारक गैसे बंद कुछ क्या खे. तो किसी ने मेरे ट्वीट के नीचे कमेंट किया कि क्या इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता कि इफ़ द सिलसिला ऑफ बायत समहाउ केम टू अ halt, no one opens the asrar that Huzur sallallahu alaihi wasallam flourished, sina basina, the circle that used to repeat of knowing the noor will stop. Then what will the ruh eat? If the food is taken away, it will die. आप देखिए इस मीनिंग में क्या किया जिस शख्स ने ये मीनिंग पोस्ट की. दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एन एसोटेरिक, एलेगोरिकल एंड मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइन्स अंडर डिस्कशन. हम बिल्कुल इसको ऐसे समझ सकते हैं, बट हाउ डू वी नो वेदर वी आर राइट इन दिस इंटरप्रिटेशन? इट्स ओनली पॉसिबल विद इन द ट्रेडिशन ऑफ द स्कूल. द पीपल हु हैव एक्वायर्ड डायरेक्ट नॉलेज फ्रॉम द ऋषि कैन कन्फर्म दिस. डिड ही मीन दिस? What this means is that कि जो hidden meaning होती है और जो real intended meaning होती है, they remain with those who have access to knowledge face to face, सीना बसीना, who are well learnt in tradition. But what are the repercussions of this particular thing on the broader understanding of poetry? We now understand that hidden meanings और esoteric meanings ये तभी हमको पता हो सकती है when we have inner knowledge, inner circle का knowledge हमारे पास है, जो सिर्फ तब होगा जब आप उस ट्रेडिशन का हिस्सा हैं, जब वो इल्म आपके पास सीना बसीना पहुंचा. वेल दैट हैज़ रिपरकशंस. जैसे वेल लर्नड इन ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ? इट वुड नॉट मीन नॉलेज ऑफ कश्मीरी, बट नॉलेज ऑफ व्हाट अलमदार possessed and shared with his students, shared with us. It means to have the gifts he had to some extent. Maybe you cannot become Alamdar. In that case, you may understand that Ghalib may be better understood or taught by a lover than an Urdu expert, Iqbal by a Sufi than an Urdu expert, Keats by a romantic than an English expert, Kalaam-e-Shiekh-ul-Alam by a Rishi Sufi Buzurg than a Kashmiri expert. Ever wondered what's wrong with our educational institutions? Why aren't students learning anything from these poetry? You just got the answer. Wrong teachers. Wrong teachers from the perspective of esoteric meaning. Otherwise, they are doing correct analysis from literature point of view. वो बिल्कुल सही आपको बताते हैं कि इसमें poetic devices क्या हैं, इसका मीटर, इसकी रिदम, इसम क्या होता है, फैल क्या होता है, अलंकार, etc. Everything they tell you correctly. But the inner meanings, that's what you lose. हम अब समझ सकते हैं कि जो एसोटेरिक मीनिंग होती है, इट कैन ओनली बी डिराइव्ड बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ द शेख. ये सीना बस सीना ही डिराइव हो सकती है, उनके पास होने से ही हमको पता चलेगा कि वो कहना क्या चाह रहे थे. उनकी वोकैबुलरीज को देखना होगा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना होगा, उनका ओवरऑल कलाम समझना होगा. बट इज़ देयर एनी मोर मीनिंग दैट इज़ लेफ्ट इन द कलाम? इसके बाद भी कुछ है क्या? अब तो हिडन मीनिंग भी पता चल गई. एवरीथिंग वी नो दैट ही वांटेड टू से. It seems that अब और कुछ नहीं बचा, but there remains much of it. What the Sheikh himself understood by it. वो क्या समझते थे? At the highest level of communication, words are not carriers of meaning. They are limits to meaning. आप कहते हैं I love you. Does that do justice to what is happening inside you? अलमदार के अंदर की कैफियत क्या रही होगी जिसको उन्होंने लफ्ज़ों में डाला? ये कैफियत किसी और की हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ उनकी है. Only Alamdar can know what it feels to be like Alamdar.
And the state he is in is only his, only he would know it. Thus the ultimate real meaning remains hidden from all of us. क्या हम किसी और की कैफियत कभी समझ सकते हैं? When I say I love you, when I say I am hungry, that exact feeling जिसको मैंने उन लफ्ज़ों में डाला, that exact state of being is my alone. I alone among all of the creation of the world know it. Is there no way for you to know what I am saying when I say I love you? You might say that you have also loved. But how you feel when you love, I can never know. So to know what I feel, you have to become me. To know what Alamdar says, become one with Alamdar. How do you become one with someone when you are a distinct person? By understanding what gives you distinctness. Yourself. Self gives you identity. Self makes you distinct. They call it ego. Destroy your ego. Only Alamdar's self knows the meaning. Your self merges with him. Man tu shudam tu man shudi, man tan shudam tu jan shudi. Takas na goyat baad zi batti garam tu digari. No one should now say that you are one and I am someone else. I have become you and you have become me. I am the body, you are its soul. So that no one can say hereafter that you are one and I am someone else. So what have we done so far? हमने पहले ट्रांसलेशन और लिटरल मीनिंग समझा अलमदार के कलाम का. उस मीनिंग को हमने उन वर्ड से डिराइव किया, उसके ग्रामर से, उसके सिंटेक्स से, पोएटिक डिवाइसेस से डिराइव किया. ये लिटरल मीनिंग है, ये ज़ाहिरी मीनिंग है. फिर हमने उससे विजडम डिराइव किया, मीनिंग एज अ होल, जिसमें हमने विजडम की बात की, अदल की बात की, टाइमलेस मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस उसकी बात की. ये मीनिंग्स उसके ज़ाहिर में नहीं है, ये उसके अंदर है, उसके बातिन में है ये. फिर हम उसके आगे निकल गए और हमने बात की कि कुछ बातें होंगी जो सिर्फ उनके स्टूडेंट समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, जो ट्रेडिशन से बाहर है, जो उसकी हकीकी मीनिंग है, देनर ऑफ देनर. And then we talked about that the most hidden meaning that remains from us, which we can never know. For that, we would have to become one with Him. In this, do you see how knowledge and being are thus related? Do you see how epistemology and metaphysics are related? Knowledge is affected by and affecting your being. It is transformative. You are not learning if you are not transforming simultaneously. आप अगले अगले स्टेज पे जा रहे हों तभी आप अगला इल्म हासिल कर सकते हैं या हासिल कर रहे होंगे. डू वी नो ऑल ऑफ दिस फ्रॉम एल्सवेयर एज वेल? हमने ये कहीं और सुना है क्या कि दैट विद एवरी स्टेज ऑफ नॉलेज इज अ स्टेट ऑफ बीइंग? यही बात हमारे बुजुर्ग करते हैं. जब अलमदार ने फरमाया कुरान परान को नमूदुक, कुरान परान को नगुई सूर, कुरान परान जिंद कहते रूदुक, कुरान परान दुद मंसूर. That this last final meaning of Quran, it burnt Mansoor. What's happening with you? You think you understand it? You understand its zahir. That it is the correct interpretation, but it is the first level of understanding of any text, and it's a reflection of first level of being of a human. And that's why God said in Quran to the Bedouins, do not call yourself Mu'min, call yourself Muslim, because Iman is yet to enter your hearts. And this is what the Sufis call the first station, the second station, third station, the fourth station, and finally annihilation. So then if we apply what we understood from understanding Kalaam-e-Shiekh-ul-Alam, we understand that we can make the reading of Quran at a very literal level, and then we derive wisdom from it, which would be going beyond the apparent words, and then we can go to a deeper level, and that meaning can only be understood by staying within that silsila, within that tradition of understanding it. And then the final meaning, which only God would know. This can only be understood by direct spiritual experience. There is no other way.